सर आप म्यूट हो। Okay, so now getting my voice well? Yes sir. Yes, thank you. Okay, so good evening everybody and welcome to this evening for ionic equilibrium. As already we have discussed in ionic equilibrium, this is a very important part, undividable part of many of the biological processes and as well as some chemical industries. Acid, base and salt, these are the substances whenever they are put into the water, they produce cations and anions, and this process is called as ionization process. And there lies an equilibrium between ions and undissociated molecule, and this phenomenon is called as an equilibrium. That is what we are discussing here in this chapter. Initially we have discussed matter or substances are classified into two types, that is electrolytes and non-electrolytes. Electrolytes are again classified into two categories, that is strong electrolytes and weak electrolytes. You know well, strong electrolyte dissociates completely, whereas weak electrolyte dissociates partially. That is very important concept what we have discussed. All strong acid, strong base, and salts comes under the category of strong electrolytes, whereas weak acid and weak base comes under the category of weak electrolytes. They dissociate partially. The dissociation of weak electrolyte is measured in degree of dissociation, that is alpha. Alpha is number of mole dissociated upon total number of moles taken. That is the formula. And we know it very well, degree of dissociation for strong electrolyte is always 1. And the degree of dissociation for weak electrolyte is always very small, because the dissociation is very, very partial. There is very small amount of weak electrolyte dissociated in aqueous solution. That is what we have seen. Also, we have seen we need to define acid and base according to different theories. There is Arrhenius theory who define acid and base. There is a Lowry-Monstead theory. Then also we have Lewis theory, which is very general. And using Lewis theory, we can classify most of the substances, Lewis acid and Lewis bases. That is also what we have seen here in the chapter. In last lecture, we have discussed acid is generally represented as Ha and base is represented as BOH. And according to Arrhenius theory, acid is the substance which produces H plus ions, and base is the substance which produces OH minus ions in aqueous solution. That is also what we have seen here in the chapter. Bit going ahead, we have seen dissociation constant of acid Ka, as well as we have seen dissociation constant of base. So हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, उसे रिकैप करना जरूरी है. That is, you can say dissociation constant of acid, that is Ka is equal to concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of Ha. As acid is dissociated to produce Ha, gives you H plus plus A minus. This is dissociation of acid. Number 1. Number 2, there is a base. BO is dissociated to produce B plus plus OH minus. मैं अभी स्पीड में लिख रहा हूँ, उसके aqueous वगैरह नहीं लिख रहा हूँ. Applying law of mass action, Kb is equal to concentration of B plus into concentration of OH minus upon concentration of BOH. ये अभी नींद में भी हमारे सामने आना चाहिए. और तीसरा हमने ये लिखा Oswald dilution law for weak acid and weak base, relation between K and Kb. That is Oswald dilution law. Oswald dilution law what we are seeing, and well we are seeing that is, you can say, according to Oswald dilution law, alpha is equal to root Ka upon C, and we have seen alpha is equal to root Kb upon C. So this is what we can say. This is Oswald dilution law. So ये हमने derivation देखे Ka, Kb, and this one. Ka इस reaction का है, Kb इस reaction का है, और Oswald dilution law के हिसाब से ये है. Oswald dilution law gives the relation between degree of dissociation alpha and dissociation constant of acid, or degree of dissociation alpha and dissociation constant of base. That is what we have seen in last lecture. Am I right? ये हमने डिस्कस किया था, और ये Oswald dilution law का डेरिवेशंस एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स लिए आता है. ये तो बहुत फंडामेंटल पार्ट है, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन पता होना जरूरी, being it's very very fundamental part. Clear with this? So this is what we have seen. Now furthermore we have to go ahead with next topic called auto ionization of water. So let's move auto ionization of water. So this was the recap what we have seen till date here in this chapter. Now let's move auto ionization of water. Auto ionization of water means simply ionization of water. हम अच्छी तरह जानते हैं water ionize होता है. अभी देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि this is water H2O which dissociate into water itself, or that is in liquid form. ये भी liquid है, ये भी liquid है. So water dissociate to produce, you can say, इसमें से एक H इसको दिया जाएगा.
according to Lorentz theory, acid is the substance which donates a proton. तो ये एक प्रोटॉन दे देगा, मतलब एक ये चीज पे है, इसके अंदर 2 H है, तो यहाँ पे बनेगा H3O+. H2O था, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक्स्ट्रा है, H3O+ बनता है, दैट इज अगेन इन लिक्विड फॉर्म, प्लस यहाँ पे बचेगा OH-. OH- aqueous solution, that is liquid form. ओके, ये हम लोग को मिल जाता है. ये रिएक्शन ऐसा लिखा जा सकता है, दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है. मैं दोनों आपको बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके बुक में इस तरीके से दिया है तो हम इसे फॉलो करेंगे. अगेन इसे भी अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन. हम जब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्जन करना है बाय के. सो के इज इक्वल टू, हियर इज द प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, H3O+ into concentration of OH- upon concentration of H2 of this one and concentration of H2 of this one, दोनों का H2 आएगा. So therefore इसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, K is equal to, here you can say concentration of H3O+ into concentration of OH- upon, दोनों का हम ऐसा कर सकते हैं concentration of H2⁻², दो है ना, तो स्क्वायर कर सकते हैं, इसका सिमिलर वर्क. इस स्क्वायर को इस तरफ कैरी करते हैं तो इधर होगा ये पहले का K और ये आएगा concentration of H2O2 is equal square into concentration of H3O+ into concentration of OH-. इसके लिए नया कांस्टेंट लिया जाता है, that is K into K'. इसके लिए नया कांस्टेंट, because this is the concentration of water which is not going to change. ये water का जो concentration है that is not going to change at all. So that's why we can take it as a constant. तो K पहले से था, इसके लिए K' लाया, और that becomes, you can say, that is equal to your concentration of H3O+ into concentration of OH-. and इसके लिए हम लोग लेके आते हैं, that is Kw is equal to concentration of H3O+ into concentration of OH-. that is what we get. This is, you can say, dissociation constant of water. So जिस तरीके एसिड के बेस बात करते हैं हम लोग एसिड के बारे में, तो Ka आता है, बेस के बारे में बात करते तो Kb आता है, और वाटर के बारे में बात करते तो Kw आता है. याद रखिएगा, Kw आता है. ये इक्वेशन कुछ बुक में आपको ऐसा भी मिलता है जो अभी आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ. सो एनीवन कैन राइट लाइक दिस वन आल्सो, H2O gives you H++ OH-. so applying law of mass action to this one, applying law of mass action, K is equal to concentration of H+ into concentration of OH- upon concentration of H2O. ये H2 इधर लेके जाएंगे तो K into concentration of H2O is equal to concentration of H+ into concentration of OH-. और इसके लिए आएगा Kw is equal to concentration of H+ into concentration of OH-. so आप देखिएगा ये दोनों इक्वेशन आते हैं. अभी दोनों इक्वेशन देने के पीछे कारण ये है कि आप अलग-अलग बुक्स यूज करेंगे, अलग-अलग बुक के अंदर आपको अलग-अलग रेफरेंसेस मिलेंगे. तो में से कुछ लोग जेई प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ बुक के अंदर आपको इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा, कुछ बुक के अंदर इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा. कंफ्यूजन होने के चांसेस है, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन दिए. और need not to have any confusion regarding this one because this equation meant this one, और इसका मतलब ये है, दोनों में कोई फर्क नहीं है. उसके पीछे रीजन आप तो बताएंगे कि सर यहाँ पे तो H3O+ दिखता है, OH तो है अपनी जगह, इधर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे आप लोग तो यहाँ पे H3O+ दिखता है और यहाँ पे देखेंगे आप तो H+ दिखता है. तो ये कैसे, हाउ इट इज? द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे कारण ये है, हम पानी में कभी भी जब एसिड पुट करता है तो एसिड H+ पैदा करता है, हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयंस H+ बीइंग वेरी रिएक्टिव, H+ अकेला नहीं रहता. हम जानते हैं cations and anions are always reactive because they have the charge, and every atom, every ion which has the charge, either it is positive or negative, try to neutralize that charge. In this way this H+ produced, it is maybe by acid or maybe by base, whatever that, this H+ is being reactive, reacts with water to form H3O+. तो पानी में जो H+ होता है, मतलब एसिड भी पानी में अगर हम पुट करेंगे तभी भी वो एसिड H+ पैदा करने वाला है, लेकिन H+ अकेला पानी में रहेगा नहीं, वो बहुत रिएक्टिव है, और इसलिए H+ हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट होके H3O+ ही तैयार करेगा, H3O+ ही तैयार करेगा, तो हमें H3O+ ही मिलेगा वाटर के अंदर. सो दैट्स व्हाई H3O+ मतलब H+ मतलब H3O+, यही इक्वेशन होता है. सो अगर हम इक्वेशन ऐसा भी लिखते हैं तभी भी ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, और हम ऐसा लिखते हैं तभी भी वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है. सो डोंट गेट एनी कंफ्यूजन विद दिस वन. द रीजन बिहाइंड दैट,
H plus being very reactive, it do not exist as a H plus. It always exists as a H3O plus in water. और इसे हम लोग किसी के भी साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें से सिर्फ H plus ही रिएक्ट होगा. यही होता है क्योंकि इसके अंदर H plus बहुत इजीली डिटैच हो जाता है बिकॉज वो जस्ट अटैच हो चुका है. तो दिस H plus इजीली डिटैच, तो ये एसिड के जैसा ही काम करता है. So this is nothing but the H plus. So this is as like acid only. So you can write this equation also, you can write this equation also. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो नया टेक्स्ट बुक है उसमें इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है. So as far as your board examination is concerned, to this equation. Or as far as your JEE NEET is concerned, there are some reference book what you are going to use. There you may have this type of equation. दोनों similar है, कोई confusion करने की जरूरत नहीं है. Clear with this? Finally, Kw is a dissociation constant of water. जैसे हमने K कहा dissociation constant of acid, Kb कहा dissociation constant of base, उसी तरीके से Kw है dissociation constant of water, also known as ionic product of water. ये भी वही है. Clear with this? So no doubt at all this would be. तो मैं अभी आपके बुक के हिसाब से ये है तो मैं ये रखता हूँ, ये सीरियस करता हूँ, लेकिन आप कहीं कंफ्यूजन मत बनाइएगा, कीजिएगा. So we have this equation. ठीक है. Now यहाँ पे आते वापस. But experimentally it is found that, देखिए experimentally it is found that हम जब water लेते हैं H2O का जब 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल of water dissociate है. Found that 1 mole of water dissociate, 1 mole of water dissociate to produce, out of 1 mole of water we get 1 into 10 raised to minus 7 moles. या फिर आज बोल सकते हैं हम लोग out of 1 mole of water 1 into 10 raised to minus 7 moles dissociate. ये वर्ड यहाँ से हटाता हूं मैं और इधर डालता हूँ यहाँ पे ताकि वो स्टेटमेंट जरा परफेक्ट बने. तो स्टेटमेंट क्या बनता है अभी? It is found that experimentally out of 1 mole of water, हमारे पास अगर वाटर का 1 मोल है तो out of that 1 into 10 raised to minus 7 moles dissociate. 1 into 10 raised to minus 7 मतलब ये क्या आता है 1 upon 10 raised to minus 7. तो out of 1 10 raised to minus 7 moles, but it's very very small quantity ना, very small quantity that dissociate. तो हम वाटर का अगर 1 मोल लेते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना है 1 into 10 raised to minus 7 moles है. तो हम ऐसा कह सकते हैं वाटर जब डिसोसिएट होता है, वाटर जब डिसोसिएट होता है, जैसे मैं अभी कहा कि वाटर डिसोसिएट टू प्रोड्यूस concentration of H plus into concentration of OH minus, ये हमको मिल जाता है. So this is concentration of H plus into concentration of OH minus ऐसे मिल जाता है. तो इसका मतलब ऐसा होता है कि वाटर का 1 मोल अगर डिसोसिएट होता है तो जितने वो H plus पैदा करता है उतने ही OH minus तैयार होता है. So अगर 1 मोल of H plus पैदा किया तो 1 मोल of OH भी पैदा होता है. So whatever the concentration of H plus, same is the concentration of OH minus. Whatever the concentration of OH minus, same is the concentration of H plus, and that's why that is neutral, na? Because H plus ions are produced by acid and OH minus ions are produced by base. So that's why H plus neutralizes OH and OH neutralizes base, and that's why water is a neutral. So water is neither acidic nor basic. The reason behind that, whatever the concentration of H plus, same is the concentration of OH minus, and that's why both cancels each other, and that's why water as a whole is always a neutral. But when it is found that out of 1 mole of water, हमारे पास water का अगर 1 मोल है तो उसमें से 10 raised to minus 7 मोल डिसोसिएट होते हैं, मतलब वो उसका अल्फा है. तो जैसे कल हमने देखा था कि अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो H plus और OH minus के अल्फा ही बनेंगे. इसका मतलब ऐसा आता है you can say concentration of H plus must be equal to concentration of OH minus. इससे पता चलता है इस इक्वेशन जितने H plus है उतने ही OH है, और वो है कितना 1 into 10 raised to minus 7 moles उतने तैयार होते हैं. जब वाटर का आउट ऑफ 1 मोल 1 into 10 raised to minus 7 moles डिसोसिएट होते हैं. 1 into 10 raised to minus 7 moles, ये 1 into है यहाँ पे 1 into 10 raised to minus 7 मोल डिसोसिएट होते हैं. तो इसके भी इतने ही बनेंगे ना. जैसे कि हमने कल एग्जांपल दिया था कि अगर हम 100 रुपए लेके जाते हैं मार्केट में और हमने 10 रुपए का चाय पिया, 90 रुपए वापस आएंगे, तो हमने जो खर्च किया वो 10 ही रुपया है ना. सो हमारे पास जो बचे पैसे हैं वो 100 minus 10 है, इतने पैसे बचे हुए. तो उसी तरीके से वाटर का 1 मोल 10 raised to minus 7 मोल डिसोसिएट होता है. इसके और इसके उतने ही बनेंगे, 10 raised to minus 7 मोल्स ही बनेंगे. तो उनका कॉन्सेंट्रेशन यही होगा. सो this is nothing but the ionic product of water. So we know it very well. Kw is equal to concentration of
H3O plus into concentration of OH minus. अभी मैंने ये बताया आपको कि concentration of H3O plus is equal to concentration of H plus. ये याद रखिएगा, ये कई बार बताया मैंने कि हम जब H3O plus कहते हैं तो उसका मतलब H plus होता है, और जब H plus कहते हैं तो उसका मतलब H3O plus होता है. So ये इक्वेशन अभी यहाँ पे मैंने ऐसा रिएक्शन लिखा है, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन ऐसा है जो हम ऐसे लिखेंगे या फाइनली यहाँ पे आएगा. तो KW is equal to H3O plus and OH minus ऐसा. So H3O plus का मतलब होता है H plus और OH minus का मतलब OH plus ही है. तो हमने ये देखा कि OH plus कितने हैं H3O plus, that is 1 into 10 to minus 7. OH minus कितने हैं 1 into 10 to minus 7. तो दोनों यहाँ पे हम रख सकते हैं, दोनों यहाँ पे रख सकते हैं. So we got here KW is equal to, इसके बदले आएंगे 1 into 10 to minus 7 और into यहाँ पर भी आएंगे 1 into 10 to minus 7. कुल मिला के KW is equal to 1 into 10 to minus 40. This is what we get called as ionic product of water. So ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनली, KW is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus is equal to 1 into 10 to minus 14. ऐसा आ जाता है, ऐसा आ जाता है. So we got this one. ये इक्वेशन फाइनली मिल जाता है हम लोगों को. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So ये लाइन जो है ना, this line is very important. ये लाइन is experimentally proven. ये लर्निंग करना पड़ेगा आपको. It has been experimentally found that out of 1 mole of water 1 into 10 to minus 7 moles dissociate. उतने dissociate होते हैं. This has been experimentally found. That's why whatever the H plus ions produce, same as the OH minus ions, and that is nothing but the 1 into 10 to minus 7. तो इनके वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन आ जाता है, जिसके अंदर this KW is called as a dissociation constant of water या फिर ionization constant of water, and this is nothing but the ionic product of water. The reason behind that, these are the ions which actually water produces. So these are the H3O plus मतलब H plus and these are OH minus ions which are produced by water. So these are the ions of water and इनका ये product है, मतलब this is called as ionic product of water. So ionic product of water is always equal to dissociation constant of water, which must be equal to 1 into 10 to minus 40. So what is the ionic product of water is 1 into 10 to minus 40. This is what we get here. Clear with this? So this is the auto ionization. हम जो घर में पानी पीते हैं, अगर हम कंसीडर करते हैं कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, होता नहीं है, बिकॉज हम जनरली कहीं या तो कारपोरेशन का वाटर पियेंगे या तो हमारे घर के अंदर प्यूरिफायर होगा उसका वाटर पियेंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल इंप्योरिटीज होते हैं. साइंटिफिकली प्योर वाटर मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ओनली H2O, ओनली H2O, दैट इज ए ग्रेड ऑफ वाटर कहा जाता है, जो पॉसिबल नहीं है, उसे लेबोरेटरी में भी तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगता है. सो हमारे घर के अंदर तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता नहीं, क्लीन वाटर जरूर होगा हमारे घर के अंदर, बट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होगा. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मींस वाटर ओनली कंसिस्ट ऑफ H2O. अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमारे घर के अंदर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, H2O है, तो उसके अंदर हमेशा इसी टाइप का सिनेरियो रहेगा जो नेचुरली which is been find out by the scientist. So hope so everyone got it. The topic was, हम डिस्कस कर रहे थे dissociation constant of acid, that is Ka, dissociation constant of base, that is Kb, according to Oswald dilution law, degree of dissociation of weak electrolytes and its dissociation constant, that is Ka and Kb. The alpha K alpha Kb ये रिलेशन हमने देखा. एंड अभी जो हमने डिस्कस किया वो है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर के अंदर ही वाटर का खुद का अपना आयनाइजेशन होता है और वो इस तरीके से होता है. और साइंटिफिकली जिस तरीके से फाइंड आउट हुआ, दैट इज आउट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर 1 into 10 to minus 7 मोल डिसोसिएट, और उतने डिसोसिएट होते हैं और वो सारे पुट करेंगे हम लोग तो हम फाइनली मिलता है dissociation constant of water Kw is equal to concentration of H2O plus into concentration of OH minus, which is called the ionic product of water, and this is always equal to 1 into 10 to minus 14. That is the equation what we get here. Clear with this? So that's done. Clear? Now the thing is that जैसे मैंने आपको बताया कि water has the same concentration of H plus and same concentration of OH minus, and that's why water as a whole is always neutral. Water as a whole is always neutral. हमेशा वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए तो हम लोग पानी पी पाते हैं या फिर बहुत सारे रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं. बट अगर concentration of H plus ज्यादा हो जाएगा या concentration of OH minus ज्यादा हो जाएगा तो this solution leads to either acidity or either basicity. Solution will be either acidic or either basic, and that's why we have to discuss the concept called as acidity or basicity, which is measured in pH scale. So next topic is nothing but the pH scale.
pH and pOH scale. Actually हमारे बुक के अंदर सिर्फ pH scale भी है, इस pH scale ही है, but हमें तो pOH भी देखना पड़ेगा और pH भी देखना पड़ेगा. So we have to discuss the pH and pOH scale. So let's see what is this pH and pOH scale. We'll discuss over here. What is pH and pOH scale? जैसे मैंने अभी बताया कि two substances are very important. Number one is acid, which produces H plus ions in aqueous solution. That is hydrogen ions in aqueous solution. And दूसरा a base, which produces OH minus ions in aqueous solutions. So the substance which produces OH minus ions in aqueous solution is called as a base, and the substance which produces H plus ions in aqueous solution is called as acid. The thing is that whenever the concentration of H plus is equal to concentration of OH minus, solution has to be neutral. But if the concentration of hydrogen ion is greater than OH minus, or vice versa, concentration of OH minus is greater than H plus, then solution will be either acidic or either basic. Solution will be either acidic or either basic. So there can be three categories. Solution can be acidic, solution can be basic, and solution can be neutral. So there can be three possibilities. And this acidity of the solution, this basicity of the solution, वो किस तरीके से measure करेंगे? So in order to measure that, we have brought the new scale called a pH scale. So pH is the measure of acidity of the solution. Or once we know the acidity, we can predict the basicity. क्योंकि उसका भी एक रिलेशन है, उसका भी एक रिलेशन है. तो पहले हम लोग what is pH, what is pOH ये देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उनका रिलेशन डिस्कस करते हैं. So सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि we have to discuss ये pH है क्या और ये pOH है क्या. तो pH and pOH are the terms which are used to measure the acidity or basicity of the solutions. So hope everyone got clear. pH is the term which is used to measure the acidity or basicity of the solutions, and based on that we can have the conclusion at the end. So सबसे पहले देखेंगे what is pH. सबसे पहले देखेंगे what is pH. pH का definition है. pH का definition और formula वही है. pH is negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration. See, wording में भी ऐसे लिखा जाता है और mathematical formula भी ऐसे लिखा है. This is the mathematical formula of pH. So this is, you can say, pH. So this is mathematical formula of pH as well as this is the definition. So definition भी ऐसा ही wording में लिखा जाता है. Negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration is known as pH. Negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration is called as pH. And pOH उसके opposite में है. Negative logarithm to the base 10 of OH minus ion concentration is called as pOH. So second definition you can have pOH. So pOH is nothing but negative logarithm to the base 10 of OH minus ion concentration. So negative logarithm to the base 10 of OH minus ion concentration or hydroxyl ion concentration is called as pOH. And the negative logarithm to the base 10 concentration of H plus ion, base 10 of concentration of H plus ion is called as pH. Definition भी वही है और उसका mathematical form भी वही है. So mathematical कोई पूछेगा pH का तो ये formula है. pOH का कोई पूछेगा तो ये है. और definition क्या है? आपको जनरली एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं. तो डेफिनेशन क्या होगा? The negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration is called as a pH, and negative logarithm to the base 10 of OH minus concentration is called as a pOH. So we got both of the definition, pH and pOH. So hope everyone got this, both of the definition, that is pH and pOH. Now this pH and pOH depends upon the concentration of H plus. अब देखिए concentration of H plus बदलेगा तो pH का वैल्यू बदलेगा. Concentration of OH minus बदलेगा तो pOH का वैल्यू बदलेगा. So value of pH and pOH depends upon concentration of H plus and concentration of OH minus ions. उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. अभी पहले वाटर के केस में डिस्कस करते हैं. तो वाटर के केस में आप देखिएगा कि वाटर के केस में है क्या. So water dissociate to produce H plus into concentration of OH minus ऐसा आ जाता है. So plus concentration of OH minus ऐसे मिल जाता है. Applying law of mass action, we got Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. ये हम लोगों को मिल जाता है. तो हमने ये भी देखा यहाँ पे कि concentration of H plus is equal to concentration of OH minus is equal to 1 into 10 raised to minus 7. We have seen this. ये हमने देखा. और ये भी देखा हमने कि ये Kw is equal to 10 raised to minus 14 ये भी देखा हमने. अब देखिए, we have this equation. ये equation हमारे सामने है. So इस equation के आधार पर देखिएगा आप लोग, हम we can find out the relation between pH and pOH. So let's come here. We have, therefore we have. ये टॉपिक ऐसा है
relation between pH and pOH. Relation between pH and pOH. दिखाई दे रहा है? शायद ऊपर गया, बहुत ऊपर गया. Okay. So we can have relation between pH and pOH. Relation between pH and pOH. Now we have हमारे पास ये इक्वेशन है. This is we can say Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus is equal to 10 raised to minus 14. 1 into 10 raised to minus 14 मतलब उतना आता है. तो इसका मतलब ये है concentration of H plus into concentration of OH minus is equal to 10 raised to minus 14 या 1 into 10 raised to minus 14 ये आ जाता है. Now taking log of both sides. Taking log of both sides. ये इक्वेशन के दोनों साइड्स का लॉग लेते हैं. ठीक है. सो इधर क्या आएगा फिर log बेस्ड इन कंसंट्रेशन H प्लस. अब यहाँ पे इंटू के लिए प्लस बनेगा है ना, प्लस log बेस्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू minus 14 log of 10. log of 10 इसका भी लॉग आएगा ना, तो इस तरफ का भी लॉग लेना है, इस तरफ का भी लॉग लेना है. We have to take a log of both sides, left hand side and right hand side. So this is left hand side, this is right hand side. So we took the log of this one. So now changing signs. जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव करते हैं, जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे पॉजिटिव करते हैं. This is positive will be converted in negative. This is positive converted to negative. This is positive converted to negative, and this is negative converted to positive. So what will happen here? Minus log base 10 to the H plus ion concentration. Minus log base 10 to concentration of OH minus ion concentration is equal to plus 14. Log 10 is 1. So 14 आएगा. Now minus log base 10 H plus क्या होता है? Minus log base 10 H plus होता है pH. So instead of this we'll be having pH. And minus log to the base 10 of OH minus ion concentration क्या होता है? Minus log to the base 10 of OH minus concentration pOH होता है. So instead of this we can write pH plus, instead of this is pOH, which must be equal to 14. So this is the relation between pH and pOH. Hope everyone got this. What is pOH and what is pH? So we got that pH plus pOH is equal to 14. This is very important equation for this pH and pOH. So water has, ये हमने जो value use किए थे वो water की value use किए थे, because हम अच्छी तरह जानते हैं कि water has same concentration of H plus and same concentration of OH minus ions. And that's why from this ionic product of water, this is the equation which is called the ionic product of water. From this equation we have derived pH plus pOH is equal to 40. किसी भी solution के अंदर जितना pH होता है और जो pH होता है वो दोनों का रेंज 14 के प्लस नहीं होगा. तो हो सकता है इसके अंदर इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 7 है, तो इट विल बिकम 40. बट जरूरी नहीं कि दोनों का 7 हो सकता है pH का वैल्यू 8 हो, इसका वैल्यू 6 हो, बट दोनों का वैल्यू हमेशा 14 ही रहेगा. तो pH and pOH range never exceed beyond this 14, so that always remains the 14. So अगर pH कम होगा तो pOH अपने आप बढ़ेगा, और pOH अगर बढ़ेगा तो pH अपने आप कम हो जाएगा, because in order to have both this sum must be equal to 14. So that's why we got this one. So pH plus pOH is equal to 14. So pH plus pOH is equal to 14. That is what we get here in this one. So so that is what we can say pH and pOH. So this is very important equation that we are going to decide the acidity or basicity based on this pH and pOH. Now let's move bit ahead with this acidity or basicity of the solution. Okay. Solutions are of three types. Number one, neutral solution. Number two is acidic solution. And number three is, you can say, basic solution. Three type of solutions होता है. Acidic solution, basic solution, मतलब neutral solution, acidic solution and solution neutral कब होगा? अभी हमने देखा. If concentration of H plus is concentration of OH minus must be equal to 1 into 10 raised to minus 7, then this must be a neutral solution. Neutral solution में जितने H plus है उतने ही OH होते हैं, और दोनों अगर similar रहेंगे तभी जाके हम लोग कह सकते हैं that is concentration of solution is 10 raised to minus 7, and then that solution is neutral. जो water के केस में, तो water के केस में concentration of H plus and concentration of OH minus is equal to 10 raised to minus 7, and that's why this is nothing but, you can say, a neutral solution. So water is a neutral solution because it has concentration both equal. तो इसके अंदर होगा क्या
कि pH भी लेते हैं तो pH is 7 as well as pOH also 7 and that's why pH plus pOH is equal to 14. ऐसा ही होगा. Acidic solution के अंदर होगा concentration of H plus must be greater than concentration of OH minus solution, then solution has to be acidic. और basic case में होगा concentration of H plus must be less than concentration of OH minus solution. So concentration of OH solution is greater than this one. So concentration of OH is greater, solution is basic. And concentration of H plus is greater, that is you can say solution is acidic. तो होता क्या है कि here pH is less than 7. pH is less than 7. And you can say pOH is greater than 7. ऐसा केस होगा. और इस केस में क्या होगा देखिए, concentration of OH is greater than, तो pH is greater than 7 and pOH is less than 7. ऐसे केस आते हैं. ये सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है. हमारे पास इक्वेशन है, उस तरीके से हम सॉल्व भी कर सकते हैं. अब देखिएगा, देखिए हम जानते हैं कि pH क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H plus ion concentration. और हम ऐसे जानते हैं कि concentration of H plus is equal to concentration of OH minus which is equal to 1 into 10 raised to minus 7. ये अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो pH is equal to नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ concentration of 10 raised to minus 7 ऐसा आएगा. अभी ये लेंगे हम लोग तो pH क्या आएगा, pH इसका लॉग लेंगे तो ये 7 आगे आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 7 into log base 10 आएगा. This will be 1, so pH is equal to 7 ऐसा आता है. So अब देखिए, अगर हम ये concentration consider करते हैं, that is you can say concentration of H plus concentration of OH minus is equal to 10 raised to minus 7. तो इसका मतलब concentration of H plus कितना है, 10 raised to minus 7 है. तो हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया जो हमारा फॉर्मूला है, pH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, pH is equal to negative logarithm to the base 10 of H plus concentration. और H plus का concentration कितना है, 10 raised to minus 7. ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो रूल है, रूल क्या है हमारा, लॉगरिथम a raised to n. log of a raised to n क्या होता है, n of log a ऐसा आता है ना, n of log a आता है. तो उसी तरीके से किया हमने. सो ये जो 10 raised to 7 है तो 7 आगे आएगा, ये माइनस है, ये 7 माइनस आ गया है, प्लस हो जाए प्लस 7 log base 10. तो pH is equal to 7 ये हम लोग उसके अंदर मिल जाता है. Clear with this? So that is what we get here. ये हमें इसके अंदर मिल जाता है, that's why pH is 7. तो इसी आधार पर we can draw a pH scale. हम लोग pH scale ड्रॉ कर सकते हैं इसी आधार पर. जिस तरीके से pH 7 आया तो उस तरीके से pOH भी 7 आता है. ओके, सो इन दैट सेंस यू कैन से अगर pH 7 है तो pOH भी हमारा 7 होगा, तो जिस हिसाब से उसी हिसाब से वो आएगा. तो देयर इज अ डायग्राम कॉल्ड एज pH स्केल एंड pOH स्केल, वो निकाला जाता है. ओके, तो pH स्केल का एक ऐसा स्केल बनता है, हमारा जैसा स्केल होता है उस तरीके से स्केल है. इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, दिस इज 1 into 10 raised to minus 7 and this is 7 and this solution is neutral. ये है pH स्केल, जैसे हमारे कंपास के अंदर स्केल होता है उस तरीके से स्केल है. और यहाँ पे जो ऊपर का लाइन है that indicates you can say pH and pOH and this indicates concentration of H plus ions and concentration of OH minus ions. So this is 1 into 10 raised to minus 7. So you can say here, you can say 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 1. Or here we can say 10 raised to 0. 10 raised to 0. Here, 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 9, 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 11, 10 raised to minus 12, 10 raised to minus 13. Here, 10 raised to minus 14. So, this lower scale indicates concentration of H plus ions or concentration of OH minus ions. And upper scale represents the respective pH. तो अभी अगर ये 10 raised to 0 है तो 10 raised to 001, that means this will be 0. Here, this will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the pH. Respective pH जो हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था उसी हिसाब से ये respective pH बनेगा. 10 raised to 7 7, तो ये 8 का क्या आएगा, 8 आएगा.
यहाँ पे क्या आएगा 9, here 10, 11, 12, 13, and this will be 14. So this is what we can say. Here you can say this is solution where acidic, and here solution where we can say basic. Basic. The reason behind that, इस तरफ क्या हो रहा है ना, इस तरफ concentration of H plus is greater than 10 raised to minus 7 और pH is less than 7. और इस तरफ क्या हो रहा है, concentration of H plus is less than 10 raised to minus 7 and the pH is greater than 7. तो solution is basic. तो अब देखिए this is the neutral layer, यहाँ पे solution basic होता जा रहा है और यहाँ पे solution acidic होता जा रहा है. तो this is pH scale. ये कॉन्सेप्ट्स के आधार पर ही पढ़ा जाता है और कॉन्सेप्ट्स के आधार पर ही समझा जाता है. तो हमने जो pH का डेफिनेशन देखा है, जो फॉर्मूला देखा है, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन, उसके आधार पर हम लोग ये डिराइव करते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टेंड्स टू -7 है तो pH 7 होता है. तो अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू -6 है तो pH 6 होगा, -5 के लिए 5 होगा, सो ऑन. लेट्स टेक pH और इस तरफ हमारा pH दिखता है. तो जब pH लेस देन 7 है तो pH ग्रेटर देन 7 होगा और यहाँ पे pH greater than 7 है तो pH less than 7 होगा. तो here when concentration is at -7 और pH is 7, solution is neutral. और pH 7 होगा तो pH भी 7 होगा, because हम ये भी इक्वेशन अच्छी तरह जानते हैं, that is pH plus pOH is equal to 14. So this is the concept of we have seen over here. Clear with this? So we have seen pH, we have seen pOH, and also we have seen pH plus pOH and the pH scale. Clear with this? Is there any doubt to anyone? Is there any doubt to anyone? Okay, so hope so everyone got the topic what we have seen over here. That is, you can say pH scale, and pH scale decide the acidity or basicity of the solutions. So I will recommend you just revise this topic. This is nothing with the pH scale. Solution acidic होना है तो concentration of H plus greater than 7 होना है, -7, and उसका pH less than 7 होना है. और solution basic होता है तो concentration of H plus is less than 10 raised to -7 and concentration of H plus pH is the pH is greater than 7. इस टाइप का सिचुएशन होता है. So this will decide the acidity or basicity. So pH अगर greater than 7 है तो pOH less than 7 होगा. तो pH से पता है तो pOH निकाल सकते हैं, pOH पता है तो pH निकाल सकते हैं. H plus concentration पता है तो OH निकाल सकते हैं, OH पता है तो H plus निकाल सकते हैं. So that is what we can see. Because हम ये भी जानते हैं, here ये भी हम जानते हैं, concentration of H plus into concentration of OH minus is equal to 1 into 10 raised to -7 ऐसा होता है. Sorry, 1 into 10 raised to -14 ऐसा है. So अगर हमारे पास H plus concentration है तो OH निकाल सकते हैं, OH है तो हम लोग H plus निकाल सकते हैं. So onwards using this equation हम निकाल सकते हैं. So that is what we can say pH scale, which will decide the acidity or basicity of the solution. Clear with this? Till then, thank you very much. See you tomorrow. Thank you.